My dear students, how are you? So from today, uh, the new chapter I am going to start. I think already I have started. So this will be the introductory lecture on the second chapter of the chemistry, that is acids and bases. Okay, so let's know something about the acids and bases, and this lecture will be useful for class 9th and for class 10th as well. Okay, let's study about the second chapter, that is acids and bases. So let me throw some light upon these two terms, what is acid and what do we call the base. Let me throw some light there. Now listen, suppose I am giving you two things here. Let me tell you, I have given you, this is the lemon juice. Okay, I have given you two things here. One is lemon juice and another one is the soap water. Okay, now if I ask you, how will you differentiate between these two things, between lemon juice and soap water? How will you differentiate? Means how can you differentiate between the lemon juice and the soap water? इन दोनों में कैसे आप इनका differentiate करेंगे? So obviously your answer will be their color. Their color is also different and their appearance is also different. So these are the differences, but these are not the differences, we cannot say, right? Okay, rather these are some the properties of these two things. Okay, one, the color of the lemon juice is appearing like here yellowish and it's like pinkish color. Okay, so same is the, so now there might be some other differences also through which you can just identify these two things. Okay, so this basic difference is their taste. Obviously by the taste, this is the most important difference. Okay, so obviously by the taste you can differentiate between these two things. Okay, the difference between lemon juice and the difference between the soap water. So by tasting these two things we can differentiate between two things. Okay, now what will be the taste of the lemon juice? The taste of the lemon juice is sour and the taste of the soap water is bitter somewhat. Okay, so this taste indicates that this is lemon juice and this is soap water, because their taste is different. One is having the sour taste and one is having the bitter taste. Okay, now question is what? Question is why this lemon juice is having sour taste and why does this soap water is having a bitter taste? Why? Question is this, why does this lemon juice is having a sour taste and why does the soap water is having a bitter taste? So there should be a reason. Yes, there is a reason. The reason is the taste of the lemon juice is sour. This is due to the presence of acid, because the acid is present in the lemon juice. That is why the taste of the lemon juice is sour. Okay, similarly the soap water taste is bitter. This is because due to the presence of base, because base is present in this present in this soap water. That is why the taste of the soap water is bitter. Okay, so this will be the taste of the soap water. Bitter means like you can say kadwa like, and so like khatta like. Okay, so this is the taste there. Okay, now now if I ask you, all the time you will taste these two things? All the time means whenever you want to taste, whenever you will be asked to differentiate between the acids and to differentiate between the bases, so all the time you will taste? No, because the acids are strong also. Okay, they have some burning effect also. So if you try to taste these things, so they have the burning effect also. If like in this case, a drop of this a drop of any acid, if I pour on this table, so it will have a burning effect here. So do not try this always tasting. Okay, getting na? Because already there are the varieties in the acids also, so it is not all the time correct to taste the acids. Okay, getting na? Now let me define the acid. So acid is what? Acid, it is the Latin word acidus. Acid word is came out of the Latin word acidus, which means sour. जिसका मतलब होता है खट्टा. ओके, एंड जो सावरनेस होती है आपकी, जो एसिड की जो सावरनेस होती है, उनका जो खट्टापन होगा, दैट इज वेरिंग ऑल्सो. मीन्स एवरी एसिड इज नॉट हैविंग द सेम टेस्ट. ओके, सम आर हैविंग less sourness and some are having more sourness. Okay, so their sourness will also be changing. Okay, so the intensity of the sourness will also be changed, यानी खट्टापन उनका कम ज़्यादा होगा एसिड्स. Okay, that is why they are different from each other. Now if I talk about the soap water,
So soap water is having the base, also known as the alkali. Okay, soap water is having the base. So due to the presence of base in the soap water, the taste of the soap water is what? Bitter. The taste of the soap water is bitter. Okay dear. Bitter means mild bitter like. Okay, some are more bitter and some are less bitter. Okay dear. So now some examples of the base I can tell you that like this. This is baking soda, like washing soda, like quicklime. These are some examples of the basic compounds. Okay, now if you try the sulfuric acid, now all the time you cannot try the trying tasting. Okay, suppose if you try to taste the sulfuric acid, so it will burn. Okay, like suppose few drops of acid you pour on your hand, so it will have a burning impact. So do not try this. Clear na? Do not try this. Okay, so now how will you differentiate then? How will you differentiate between acids and bases? Because all the time you cannot taste. One I told you, by tasting you can differentiate. The taste of the acid is sour and the taste of the base is bitter. So by this you can differentiate between acid and bases, but all the time not. So what, there should be some indicators to differentiate between the acid and bases. Those are known as the indicators. Those are known as the indicator. So indicators are what? Indicators are the substance used to check whether the compound is acidic or basic. है ना? और हर समय आप टेस्ट नहीं करोगे एसिड और बेस को, बिकॉज सम आर हार्मफुल ऑल्सो. तो उसके लिए हमारे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं. उन इंडिकेटर्स का यूज करते हैं हम, कोई चीज़ आपकी एसिडिक है या बेसिक नेचर की है. सो दोज आर नोन एज द इंडिकेटर. सो लेट अस know about the indicators. Okay, so what will be the impact of the indicators on acid and what will be the impact of acid indicators on base? उनका हम चेक करेंगे, उसी हिसाब से हम बताएंगे. जैसे इंडिकेटर, कोई इंडिकेटर लेंगे आप, उसका एसिड में क्या इम्पैक्ट होता है और या उसका बेस में क्या इम्पैक्ट होता है. सो दिस विल टेल यू वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और इट इज बेसिक. नाउ व्हाट इज इंडिकेटर, है ना. सो नाउ लेट्स से देयर आर द टू स्टूडेंट, one is Jack and one is Mary. This is Jack and this is Mary. Okay, now I have given two yellow papers to both of them. One yellow paper I have given to Jack and one yellow paper I have given to Mary. Okay, now look here, and I have given them some liquids which are containing acids and bases, but don't know which one test tube is having the acidic कंटेंट एंड विच वन ट्यूब इज हैविंग द बेसिक कंटेंट. दिट वी आर डोंट. उनको हमने टेस्ट ट्यूब दिए हैं, लेकिन किस टेस्ट ट्यूब में आपका कौन सा कंटेंट है, एसिड है, बेस है, हमने आपको बताया नहीं. बट आई हैव गिवन यू टू पेपर्स, येलो पेपर्स. नाउ जैक इज डूइंग व्हाट. जैक ने किया, जैक ने एसिड एक इसमें से एसिड की एक वो निकाला. इसने क्या निकाला, एक टेस्ट ट्यूब निकाला. उसको इसने येलो कलर के ऊपर, येलो कलर का जो आपका पेपर था उसके ऊपर पोर कर दिया. सो जैक पोर द लिक्विड ऑन द येलो पेपर. सो आप जैसे ही जैक ने इसमें येलो पेपर में इसने ये लिक्विड डाला, तो इट चेंजेस द कलर. इसका कलर आपका रेड हो गया. यू कैन सी हेयर. सो जैसे ही जैक ने एक लिक्विड लिया, उस लिक्विड को जैक ने पेपर पे डाला, तो उस पेपर का कलर आपका क्या हो गया, रेड हो गया. ओके, उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया. अब मैरी ने क्या किया, मैरी ने क्या किया, मैरी ने, ये मैरी है, दिस इज जैक. जैक ने क्या किया, एक ड्रॉप लिया ऐसे, इसका ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का एक ड्रॉप लिया और देखा कि येलो कलर आपका रेड बन गया. एंड सेम वे मैरी ऑल्सो टेकन वन ड्रॉप ऑफ दिस वन लिक्विड एंड पॉर इट ओवर द येलो कलर पेपर, बट इट डिड नॉट चेंज इट्स कलर. ये अपना इसने अपना कलर चेंज नहीं किया. So there is no change in the color of the yellow paper, and there is the change in the color of the yellow paper in this case. So the liquid or the compound which is changing the color, जो compound आपका color change कर रहा है, that compound is acid. That compound is acid. जिस compound ने color change किया, तो ये आपका क्या था, that was acid. Sorry, base. That was base. So the compound which is changing the color of the yellow paper is base. एंड द कंपाउंड विच इज़ नॉट चेंजिंग द कलर ऑफ द येलो पेपर, जो येलो कलर का जो पेपर उसका कलर चेंज नहीं कर रहा है, सो दैट इज एसिड. तो ऐसे भी आप एसिड और बेस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दस येलो कलर इंडिकेटर. ये इंडिकेटर, ये येलो कलर जो पेपर है आपका किसका काम करेगा, यहाँ पर इंडिकेटर का काम करेगा. इसने बता दिया कि ये चीज़ आपका बेस है और ये आपका एसिड है. सो दिस हाउ वी कैन टेल, बिकॉज इफ यू विल pour सम ड्रॉप्स ऑफ दिस बेस ओवर दिस येलो कलर पेपर, सो इसका कलर आपका रेड हो जाएगा. एंड सेम वे
if you pour some drop of acid over this yellow color paper, it will not change its color. ये अपना color change नहीं करेगा. So this is how you can differentiate between these two things. Okay. Now जो आपका येलो कलर का पेपर था, येलो कलर का पेपर है क्या? दिस इज नथिंग. दिस इंडिकेटर जो येलो कलर का जो आपने इंडिकेटर लिया, दिस इंडिकेटर इज नथिंग अदर देन द टर्मेरिक. ये आपका टर्मेरिक है. टर्मेरिक यू आर नोइंग ना, यू आर यूजिंग इट एट होम ऑल्सो, हल्दी है ना. सो टर्मेरिक इज एन इंडिकेटर विच इज यूज टू आइडेंटिफाई whether the given substance is acidic or basic. So it is a home, you can say home remedy to detect whether the given substance is acidic or basic. कि कोई एसिडिक सब्सटेंस है, बेसिक सब्सटेंस है, उसको आप घर में ट्राई कर सकते हो बाय यूजिंग दिस. यू कैन टेक अ पेपर एंड ओवर दिस यू कैन पेस्ट दिस टर्मेरिक पाउडर. यू कैन पेस्ट दिस टर्मेरिक पाउडर एंड यू विल हैव अ इंडिकेटर लाइक दिस टर्मेरिक इंडिकेटर. तो टर्मेरिक इंडिकेटर आप उसका यूज कर सकते हैं. व्हेन यू विल पॉर ओवर दिस acidic water, acidic liquid, it will not change its color, but as soon as you are pouring the basic substance over it, it will change its color to red. क्लियर है ना. तो टर्मेरिक इज व्हाट, टर्मेरिक इज यूज्ड हियर एज द इंडिकेटर. तो टर्मेरिक का हमने यहाँ पर एक इंडिकेटर के रूप में यूज किया. सो सेम वे देयर आर अदर, दीज आर नोन एज द नेचुरल इंडिकेटर. तो टर्मेरिक यहाँ पर आपका नेचुरल इंडिकेटर कहलाएगा. कौन सा इंडिकेटर कहलाएगा? नेचुरल इंडिकेटर. सो सेम वे सम अदर नेचुरल इंडिकेटर्स आर देयर. यस, देयर आर सम अदर नेचुरल इंडिकेटर्स ऑल्सो लाइक चाइना रोज. सो व्हाट इज चाइना रोज? चाइना रोज इज अ प्लांट है ना. तो इसका जो फ्लावर्स होते हैं, इसका हम इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं. सो हाउ कैन यू यूज? वी टेक सम फ्लावर्स, उसके पेटल्स लेते हैं, फ्लावर के पेटल, लाइक यू कैन दिस फ्लावर के पेटल्स लिए, एंड वी आर जस्ट इन द हॉट वाटर वी आर सबमर्जिंग. हॉट वाटर में आपने सबमर्ज किया इसको, तो आपका एक सॉल्यूशन बन गया. तो ये सॉल्यूशन आपका इंडिकेटर के रूप में हम इसका यूज़ कर सकते हैं. आपने क्या लिया? हॉट वाटर का लिए बीकर में लिया और उसमें आपने चाइना रोज के पेटल्स आपने डाल दिए. ठीक है. सो नाउ दिस सॉल्यूशन विल वर्क एज द इंडिकेटर. ये सॉल्यूशन आपका अब एक इंडिकेटर का वर्क करेगा. कैसे करेगा? अब आप जैसे ही सॉल्यूशन में से आप एक ड्रॉप सॉल्यूशन का एक ड्रॉप लोगे और उसको आप एसिड में डालते हो, तो क्या चेंज होगा? द एसिड विल चेंज इट्स कलर टू द मैजेंटा रेड. एसिड विल चेंज इट्स कलर टू मैजेंटा रेड. तो एसिड का कलर मैजेंटा रेड हो जाता है. जैसे ही आपने इस लिक्विड में से एक ड्रॉप निकाला और उसको आपने किस में डाल दिया? इस वाले लिक्विड में डाल दिया. तो एसिड में डाल दिया, तो एसिड का कलर आपका मैजेंटा रेड. इससे आप पता लग सकते हैं जो मैजेंटा कलर अगर चेंज हो गया, इट मीन्स दैट द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक. वो एसिड सब्सटेंस है. ओके. नाउ अगर इसको बेस के ऊपर अप्लाई करोगे तो क्या होगा? सेम वे, अगर इस सब्सटेंस को आपने बेस के ऊपर अप्लाई किया, तो बेस विल चेंज इट्स कलर टू द लाइट ग्रीन. तो बेस का जो कलर चेंज हो जाएगा वो लाइट ग्रीन में कलर चेंज हो जाएगा. ठीक है. सो दिस वे द चाइना रोज इज ऑल्सो यूज्ड एज द इंडिकेटर. चाइना रोज को भी हमने इंडिकेटर के रूप में किया. सो वी आर हैविंग राइट नाउ टू इंडिकेटर्स, टर्मेरिक पाउडर एंड चाइना रोज. सम अदर्स ऑल्सो नोन एज द लिटमस पेपर. नाउ व्हाट इज लिटमस पेपर? ये लिटमस पेपर क्या है? दिस लिटमस पेपर इज, यू मस्ट हैव हर्ड द टर्म लाइकेंस. लाइकेंस आपने नाम सुना होगा. लाइकेंस क्या होता है? लाइकेंस, दिस इज मेड अप ऑफ द सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन एल्गाई एंड फंगाई. एल्गाई और फंगाई आपकी इनके सिम्बायोटिक रिलेशन से आपने देखोगे सब्सटेंस के ऊपर ऐसे वाइट कलर का ये आपका बन जाते हैं, है ना. तो दीज आर नोन एज व्हाट? लाइकेंस. दीज आर नोन एज लाइकेंस. तो इसी लाइकेंस से, ये जो लाइकेंस है एल्गाई और फंगाई की कॉम्बिनेशन से जो आपके उसमें सब्सटेंसेस के ऊपर आपका ये बन जाता है, इस टाइप का आपने घरों में भी देखा होगा लाइकेंस. सो दीज लाइकेंस आर ऑल्सो यूज्ड एज द इंडिकेटर. इसी लाइकेंस से हम ये आपका क्या बनाएंगे? लिटमस पेपर बनाते हैं. इसी लाइकेंस से क्या बनाते हैं हम? लिटमस पेपर बनाते हैं. ओके. नाउ देयर इज अदर यूज ऑफ द लाइकेंस ऑल्सो. ये लाइकेंस का यूज हम पॉल्यूशन डिटेक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं. अगर सपोज किसी सीजन में आपने देखा कि पॉल्यूशन बहुत कम है, तो इसका मतलब आपको लाइकेंस, मोर एंड मोर लाइकेंस विल बी देयर. लाइकेंस ज़्यादा दिखेंगे. लेकिन आपने किसी सीजन में देखा कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है सिटीज़ में, तो वहाँ पर आपको लाइकेंस देखने को नहीं मिलेंगे. सो लाइकेन आर ऑल्सो यूज्ड एज द पॉल्यूशन इंडिकेटर. तो पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में भी हम लाइकेन का यूज कर सकते हैं, है ना, टू डिटेक्ट, सो टू इंडिकेट वेदर द पॉल्यूशन इज मोर और लेस, है ना. तो पॉल्यूशन को अगर आपको बताना है कि ज़्यादा पॉल्यूशन है या कम पॉल्यूशन है, सो यू कैन डिटेक्ट इट बाय यूजिंग लाइकेंस. सो अगर लाइकेंस मोर एंड मोर अगर हो रहे हैं आपके वहाँ उस साइड में, तो इट मीन्स द पॉल्यूशन इज लेसर देयर. ओके. इफ नो लाइकेंस आर देयर, it means there is more and more pollution. Getting now? So this way lichen used as the pollution indicator also. But we are using this lichens for acid and
basic indicator to identify the acid and base. We are using this as indicator. How we are using? We are just lichens body, we are extracting it and we are just making it liquid, और उसमें कुछ हम डाई यूज कर देते हैं, कुछ हमने डाई यूज करके इसको कलरफुल आपने बना दिया. ये आपका नेचुरल इंडिकेटर के रूप का वर्क करेगा. कैसे करेगा? अब हम क्या करेंगे, नाउ दिस नेचुरल इंडिकेटर जो आपने एक्सट्रैक्ट करके लाइकेन से हमने ये बना लिया, इसको हम एक पेपर लेते हैं, फिल्टर पेपर के उस ऊपर में हम इसका पेस्ट टाइप का लगा देते हैं. एंड दिस फिल्टर पेपर इज नोन एज लिटमस पेपर. इसी फिल्टर पेपर को आप हम क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर. अब इसमें अलग अलग कलर की डाई कर सकते हैं. अलग अलग कलर की डाई करेंगे तो आपके टू टाइप्स ऑफ फिल्टर पेपर वी कैन यूज हियर. इसी फिल्टर पेपर को हम क्या बोलेंगे? लिटमस पेपर. विच वन पेपर? लिटमस पेपर. जब हम इस वाटर को, इस लिक्विड को इसके ऊपर हम पोर करेंगे और पेस्ट कर देंगे तो वी आर गेटिंग द लिटमस पेपर. तो नाउ वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर. वन इज रेड एंड वन इज ब्लू. वी आर हैविंग टू टाइप्स, रेड एंड ब्लू. टू टाइप के आपके पास लिटमस पेपर है. सो दीज टू टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर्स आर यूज्ड as the indicators. These two types of litmus paper are used as indicator. इन्हीं दो टाइप के litmus paper का हम इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं. Let's see how we are using it. Now, when we are taking this red litmus paper, if we dip this red litmus paper in basic liquid, अगर आपने ये रेड लिटमस पेपर को आपने बेस में डिप किया, डुबोया, तो इसका चेंज आपका ब्लू हो जाता है. इट मीन्स द बेस चेंज रेड लिटमस टू ब्लू. जो बेस होता है रेड लिटमस पेपर को आपको ब्लू में बदल देता है. बट इफ यू डिप दिस रेड लिटमस पेपर इन एसिड, सो देर इज नो चेंज इन द कलर. तो रेड लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं होगा. ओके, सो दिस इज आवर रेड लिटमस पेपर इज यूज्ड एज इंडिकेटर. ओके, सेम वे blue litmus paper also used as the indicator. When you will dip this blue litmus paper in acidic solution, so it will change its color to red. जो blue litmus paper का कलर हो जाएगा वो रेड में बदल जाएगा. Similarly, if you will dip this blue litmus paper in basic solution, it will not change its color. इसका कलर अब चेंज नहीं होगा. This is how the litmus papers are also used as the indicators. Are used as the indicator. Getting now? Now, what will happen when this acidic and basic solution, आपने एक acidic solution लिया और आपने एक basic solution लिया. Now what will happen when you are combining these two? एक acidic solution और basic solution को आपने combine करके mix कर दिया एक में, तो क्या होगा? विस्फोट हो जाएगा, बम फूट जाएगा. What will happen? Okay, let's see what will happen. Now when acidic solution and basic solution are combining together, they are making salt and water. Two things are they are making. When अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन, एल्केलिन सॉल्यूशन भी बोलते हैं उसको बेस फॉर्म, ठीक है ना. जब एसिडिक सॉल्यूशन और एल्केलिन सॉल्यूशन को आप मिक्स करते हैं, दे आर फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर. रिएक्शन होती है, सो दे आर फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं. ओके, लाइक दिस एसिड एंड बेसिक आर रिएक्टिंग टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. गेटिंग ना? ऑलवेज गेटिंग ना? यस. Now the common salt which we are using home also, this is also the due to the formation of, due to the reaction between acid and bases. Clear na? So acid and base means acid and alkali are reacting together to form salt and water, and this reaction is known as neutralization reaction. This reaction is known as neutralization. So what is neutralization reaction? Neutralization reaction is the reaction between acid and alkali, after which they form salt and water. Getting na? So this reaction is known as the neutralization reaction. So formation of sodium chloride, which is known as the common salt, नमक जो आप घर में यूज करते हैं, this is sodium chloride. This is also we can form this through the neutralization reaction. Means acid and base की reaction करा तो आपको common salt यानी sodium chloride भी आपको मिल सकता है. Clear है ना? Very good. Like this. In this case we are forming this common salt. HCl लिया, NaOH लिया आपने. Now what will happen? This Na and Cl will combine together to form NaCl, and H and HOH will mix together to form H2. Okay, so this is the common salt which we are using. So this is the neutralization reaction, and in this reaction too much heat is also liberating. So it will liberate too much heat. बहुत ज़्यादा heat आपकी liberate होगी इस केस. Clear है ना? Very good. Now अब आपका question बनता है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, क्या हमेशा इसको हम लैब में ही टेस्ट कर सकते हैं?
ये लेबोरेटरी में ही इसको हम टेस्ट करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को, लाइक रिएक्शन बिटवीन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस रिएक्शन को क्या हम हमेशा लैब में ही टेस्ट कर सकते हैं, जैसे लैब में ही आप एसिड और बेस की रिएक्शन के एग्जाम्पल दे सकते हैं? नो, in the our daily life also we can see such examples, like sometime you are having too much acidity, हम बोलते हैं हमें खट्टी डकार आती, बहुत समय एसिडिटी बढ़ गई बोलते हैं, इसका मतलब द एसिड कंटेंट, आपके अंदर एसिड की मात्रा बढ़ गई, एसिड कंटेंट बढ़ गया। सेम वे जब आपको कोई आंट बाइट कर लेती है तो आप में पेन होने लगता है, इसका मतलब आपके अंदर क्या बन गया, उसमें आंट ने एसिड डाल दिया, फॉर्मिक एसिड डाल दिया, तो आपका एसिड कंटेंट बढ़ गया। इसका मतलब एसिड कंटेंट आप देखते हो आपका क्या हो गया, बढ़ गया, एसिड कंटेंट रेज हो गया। तो उसकी रेमेडी क्या है, कोई ना कोई इलाज देते हैं डॉक्टर, आपको मेडिसिन देते हैं। तो जो मेडिसिन देते हैं डॉक्टर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर ही आपको मेडिसिन देंगे। वो क्या करेंगे, एसिड बढ़ गया तो आपको कौन सा देंगे, बेस वाली मेडिसिन देंगे, यानी ऐसी मेडिसिन देंगे जिसमें बेस ज़्यादा होगा। तो उससे क्या होगा, बेस और एसिड रिएक्शन कर लेंगे तो न्यूट्रलाइज कर लेंगे एक दूसरे को। क्लियर है ना? लाइक दिस द मेडिसिन विच यू आर गेटिंग फॉर दिस एंड फॉर दिस, दिस इज द बेस, बिकॉज वी हैव द मोर एसिडिक कंटेंट। एसिडिक कंटेंट बढ़ जाता है तो इसको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रलाइज नहीं, कम करने की जरूरत पड़ेगी। तो न्यूट्रलाइज कैसे होगा, by this medicine. So this medicine is basically the base. So this is the example of neutralization reaction in our daily life also. Clear? Very good, very good, very good. So this is how we are going to close this today's topic. Thank you. Bye bye.